today's session, we will focus on the history of taxonomy with special emphasis on the third period, also known as population systematics, which makes understanding modern classification much easier. This lecture will help you understand how classification of organisms has evolved from simple observations to advanced evolutionary and population-based approaches. So let's begin our journey into the fascinating world of taxonomy. Let's take a quick look at the outlines. We have already discussed first period and second period in the history of taxonomy. Finally, we will focus on the third period, the modern period, which highlights evolutionary relationships and population-based classification influenced by Darwin's theory. By the end of this lecture, you will clearly understand how taxonomy evolved from simple observations to modern scientific methods. Lecture outcomes, we have already discussed these in the very first lecture. Third period in the history of taxonomy is also known as population systematics. What is population systematics? It is actually the study of biodiversity at population level. किस तरह? देखें, ये आपको पॉपुलेशन सिस्टमैटिक एक्शन नजर आ रहा है। इसमें अगर आप देखें तो ये सेम स्पीशीज है, ये सारे एक ही स्पीशी है और इनके डिफरेंट पॉपुलेशन बने हुए हैं। एक फॉरेस्ट में है, बर्ड्स वही हैं, वही सेम स्पीशी है। इनकी एक पॉपुलेशन माउंटेन्स में रह रही है, इनकी एक पॉपुलेशन दी जो है दैट कोस्टल एरिया में रह रही है, साहिली इलाकों पर, और इनकी एक पॉपुलेशन जो है वो ग्रासलैंड में रह रही है। आप देखें कि इनकी जियोग्राफी भी चेंज है और ये एक दूसरे से दूर भी है, आइसोलेशन भी इनके दरमियान हो गई है। तो अब जो साइंटिस्ट थे उन्होंने विद इन पॉपुलेशन स्टडी करना शुरू किया कि एक स्पीशीज के पॉपुलेशन में क्या वेरिएशन हो सकते हैं, और इसी को पॉपुलेशन सिस्टमैटिक्स कहते हैं। सो व्हाट डज इट डू? एक्चुअली इट फोकसिंग ऑन इंट्रास्पेसिफिक वेरिएशन, स्पीशीज के अंदर की वेरिएशन के ऊपर ये फोकस करती हैं। जीन फ्लो अमॉन्ग देम, क्या ये पॉपुलेशन जो कि फॉरेस्ट में रही है और वो पॉपुलेशन जो कि माउंटेन में रह रही है और वो पॉपुलेशन जो ग्रासलैंड में है, वो जो कोस्टल में है, क्या इनके दरमियान कोई जीन फ्लो है? क्या इनके दरमियान रिप्रोडक्टिव आइसोलेशन भी है? एंड एवोल्यूशनरी रिलेशनशिप भी क्या इनके दरमियान है? तो इनके ऊपर हमने फोकस करना है। और दैट्स व्हाई स्पेसिएशन एंड वेरिएशन अकर, कि जब एक स्पीशी के पॉपुलेशन आइसोलेट होते हैं, डिफरेंट एनवायरनमेंट में चले जाते हैं, तो एवोल्यूशनरी डाइवर्जेंस आती है, इनके दरमियान जीन फ्लो लिमिटेड हो जाता है, आहिस्ता आहिस्ता उनमें जो जीन फ्लो है वो स्टॉप हो जाता है, रिप्रोडक्टिव आइसोलेशन आ जाती है, और एनवायरनमेंट का भी रोल होता है, एंड देन दे बिकम न्यू स्पीशीज. So in this phase, taxonomists shifted their focus from simply describing species to understanding variation within species. सिर्फ उनको डिस्क्राइब करना या उनको सिंपली उस पर फोकस करना छोड़ के उन्होंने स्पीशीज के अंदर वेरिएशन के ऊपर फोकस करना शुरू किया. So instead of treating species as fixed and unchanging, scientists began to see them as dynamic population. उन्होंने ये कहा कि स्पीशीज जो है वो फिक्स नहीं है, बल्कि ये डायनेमिक पॉपुलेशन है, इनमें चेंजेस आते हैं. They studied how individuals within a species differ in terms of genetics, morphology, and behavior, and how these differences are influenced by environment. इन पॉपुलेशन के दरमियान जेनेटिकली, मॉर्फोलॉजिकली और बिहेवियरली जो चेंजेस हैं, और वो चेंजेस कैसे आई हैं, क्या उस पर एनवायरनमेंट इन्फ्लुएंस हुआ है, उसका इसके ऊपर कोई रोल है. So with the rediscovery of Mendel's work and the rise of genetics, taxonomy became more scientific and analytical. Researchers started using statistical methods and large sample sizes to study populations. So this period also emphasized concepts like gene flow, natural selection, and speciation, which leading to the development of population genetics. और that's why एक new area जो है वो आया जिसको population genetics कहा गया. In short, taxonomy evolved from static classification to deeper understanding of evolution and action within population. So population systematics helps taxonomists understand variation, adaptation, and how new species evolve.
तो की फोकस या की एरिया जो है फोकस के वो पॉपुलेशन सिस्टमेटिक के एक इंट्रा स्पेसिफिक वेरिएशन है, जेनेटिक एंड मॉर्फोलॉजिकल डिफरेंसेस विद इन अ स्पीशी। तो ये एक ही स्पीशी के डिफरेंट पॉपुलेशन है, तो इनमें जेनेटिक और मॉर्फोलॉजिकल क्या वेरिएशन हो सकती है। जीन फ्लो, एक्सचेंज ऑफ जीन्स बिटवीन पॉपुलेशन, क्या इन पॉपुलेशंस के दरमियान जीन का एक्सचेंज हो रहा है या स्टॉप हो गया है। reproductive isolation, barriers that lead to divergence, अगर इनके दरमियान बैरियर्स आ जाते हैं और इनकी रिप्रोडक्टिव आइसोलेशन आ गई है तो फिर तो ये डाइवर्जेंस की तरफ जाएंगे और न्यू स्पीशीज बनेंगे। इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप्स, हाउ पॉपुलेशन फॉर्म न्यू स्पीशीज, स्पीसिएशन कैसी होती है, न्यू स्पीशीज कैसे राइज होती है। So actually the focus shifted from fixed species and they started focusing on variation within species, like the rise of population genetics, पॉपुलेशन की जीन फ्रीक्वेंसीज को स्टडी करना। इस तरह जियोग्राफिक वेरिएशंस, अगर एक सेम स्पीशीज के दो पॉपुलेशंस है, एक नॉर्थ पॉपुलेशन है और एक साउथ पॉपुलेशन है, और उनमें कोई वेरिएशंस है या वो जो चेंजेस है वो मॉर्फोलॉजिकल है या वो जेनेटिकल है। इस तरह इकोलॉजी का भी रोल स्टडी करना शुरू हो गया कि इकोलॉजी का क्या रोल हो सकता है। अगर एक स्पीशीज की पॉपुलेशन, सेम स्पीशी की पॉपुलेशन एक वेटलैंड हैबिटाट में रह रही है और दूसरी डेजर्ट हैबिटाट में रह रही है, तो इनके ऊपर क्या असर हो सकता है, एनवायरनमेंट का क्या रोल होगा और एनवायरनमेंट कैसे रोल प्ले करता है इन देयर स्पेसिएशन, या उनमें जो चेंजेस आएंगी उनमें उनका क्या रोल होगा, या उनके इसमें जो एडॉप्टेशन आएंगी वो क्या होगा। So finally, these all will lead to morphological differences like light morphology, dark morphology. It will also lead to behavioral changes or behavioral studies जिसमें मैटिंग कॉज और उनकी जो बिहेवियर है उसमें चेंज आएगा। और इस तरह जो हाइब्रिड्स जो है या हाइब्रिड जोन है जहां पर हाइब्रिड्स बनते हैं, तो उसके ऊपर भी फोकस होना शुरू हो गया। Another thing is the third period in the history of taxonomy में जो सोच थी वो शिफ्ट हो गई टू इवोल्यूशन विद इन स्पीशीज। सो व्हाट इज इवोल्यूशन विद इन स्पीशीज? इट इज एक्चुअली studying the evolutionary process that occur within a single species over time, leading to adaptation and genetic diversity. For example, इस evolutionary process को समझने के लिए आप एक species ले लें और उन species के different populations ले लें। For example, ये species है और इनके ये different populations है। नाउ वक्त के साथ साथ अगर इनमें जो जीन फ्लो है वो लिमिट हो जाए, जैसे कि हर्डी बर्गला भी कहती है कि अगर जो जीन फ्लो है वो रेंडम ना हो, रेंडम मेटिंग ना हो, तो जीन फ्लो अगर लिमिट हो जाए तो उसके बाद न्यू स्पीशीज जो है वो बनेंगी। की कॉन्सेप्ट जो है वो ये है, एडॉप्टेशंस लाइक ट्रेट्स दैट एनहांस सर्वाइवल एंड रिप्रोडक्शन, तो वो एडॉप्ट हो जाएंगे। ऐसे ट्रेट्स जो कि सर्वाइवल कर सकते हो, सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट वाली बात हो जाएगी, और रिप्रोडक्शन की कैपेबिलिटी हो, तो दे विल एडॉप्ट और दे विल सर्वाइव। Another thing is intraspecific variation, diversity within species, and the third population divergence, जो सब populations बनी है क्या वो डिफरेंट बन गई है विद द पैसेज ऑफ टाइम, और क्या उनमें न्यू स्पीशीज बन गई है, लाइक म्यूटेशंस एंड रिकॉम्बिनेशंस, सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट, formation of new species. So the third period focus on how evolutionary process drive adaptation, intraspecific variation, and speciation within species. The shift from typological to dynamic polytypic species concept. Earlier taxonomists followed the typological species concept, where species were considered fixed and unchanging. However, during third period of taxonomy, this idea was replaced by polytypic dynamic species concept. In this new view, a species is not a single uniform type, but it is a collection of diverse population. Like you can see in this image, यहाँ पे सेम स्पीशी की फॉरेस्ट पॉपुलेशन है, इसकी ग्रासलैंड पॉपुलेशन है, कोस्टल पॉपुलेशन है, माउंटेन पॉपुलेशन है। So scientists recognized that individuals within a species can vary in genetics, morphology, and behavior. These variation influenced by the environment
an evolutionary process. So instead of focusing on one ideal type, like यहाँ पे हम कह रहे थे ना कि one ideal type species है, तो वो जो ideal type था, taxonomists began studying variation within population. This shift helped explain how species evolve and adopt over time. Species are no longer fixed. They are dynamic and constantly changing population. If you remember from the first period of taxonomy, तो वहां पर हमने ये कहा था कि लोकल फाना की स्टडी हो रही थी। फिर हमने सेकंड पीरियड में कहा कि लोग यूरोप से बाहर निकल गए साइंटिस्ट, और उन्होंने मुख्तलिफ जगहों से स्पीशीज और सैंपल्स कलेक्ट करना शुरू किए, तो लोकल फाना खत्म हुआ और लोग बाहर निकल गए। बट इन दिस पीरियड इंटरेस्ट again reverted back to local fauna. So, study of variation within the population. In third period of taxonomy, scientists shifted their focus back to the study of local fauna. Why? Instead of only classifying species, they began closely observing organisms in their natural environment. This led to a deeper interest in the variation within the population. आप इसमें देख सकते हैं कि ये जो पॉपुलेशन है डार्कर फर की, ये कोस्टल पॉपुलेशन है, और ये लाइटर फर जिनका है तो ये माउंटेन पॉपुलेशन है तो सेम स्पीशीज, लेकिन इनकी दोनों की जो पॉपुलेशन है वो डिफरेंट जगहों में है, और इन्वायरमेंट का असर इनके ऊपर हो चुका है। दैट्स वाई इनका जो मॉर्फोलॉजिकल एक करेक्टरिस्टिक्स है डार्कर फर एंड लाइटर फर। सेम आप इन बर्ड्स में भी देख सकते हैं कि इनके साइज में भी इवन चेंज आया हुआ है और इनके मॉर्फोलॉजिकल चेंजेस भी आए हुए हैं। सो scientists noticed that individuals of the same species are not identical. You can see, आप ये समझते होंगे कि ये आइडेंटिकल नहीं है, बट दे आर सेम स्पीशीज. So they differ in size, shape, color, and genetic traits. These variations are influenced by environmental conditions, and evolutionary processes. By studying local population, taxonomists gain a better understanding of new species and how species adopt, evolve, and sometimes give rise to new species. So taxonomy moved from simple description now to analyzing real variation within living populations. Taxonomists become interested in the quantitative analysis of characters by statistical procedures and collecting vast number of specimens. In this period in the history of taxonomy, taxonomists adopted a more scientific and quantitative approach. Instead of relying on observations, they began analyzing characters using statistical methods. They collected a large number of specimens to ensure accurate and reliable results. By measuring traits like size, shape, and other features, they could study variation within population more precisely. Statistical analysis helped them identify patterns, similarities, and differences among individuals. This approach made taxonomy more objective and data driven. It also strengthened the understanding of how species vary and evolve over time. Taxonomy became a quantitative science based on evidence and analysis. So this is how they collected a vast number of species and analyzed them closely. Rediscovery of Mendel's work and birth of genetics. मेंडल ने जिस वक्त एक्सपेरिमेंट किए थे, क्योंकि उस वक्त लोगों को इतना इल्म नहीं था, इतनी अंडरस्टैंडिंग नहीं थी, इसलिए उनका काम उनके बाद बिल्कुल ऐसा ही रह गया। लेकिन जब एवोल्यूशनरी स्टडीज और वेरिएशन विद इन पॉपुलेशन और ये स्टडी स्टार्ट हो गई इन द थर्ड पीरियड ऑफ टेक्सोनोमी, सो जो मेजर ब्रेक थ्रू हुआ with the rediscovery of Mendel's work. George Mendel's experiments on inheritance provided a scientific explanation for how traits are passed from one generation to the next. This led the establishment of a new field called genetics,
With the introduction of genetics, taxonomists gained a deeper understanding of variation within species. चूंकि ऑलरेडी वेरिएशन विद इन स्पीशीज पर बात हो रही थी, तो जब री डिस्कवरी ऑफ मेंडल वर्क, जो कि कई सालों तक ऐसे पड़ा हुआ था, जब उनको दोबारा देखा गया तो उनको समझ आने लगी. They could now explain differences among individuals in terms of genes and heredity. This transformed taxonomy from simple observation to a more scientific discipline based on genetic principles. So, the rediscovery of Mendel work laid the foundation for modern evolutionary studies. The role of environment in speciation. Here you can see two types of environment: Arctic environment and rainforest environment. और आप जस्ट देखने से भी इनके दरमियान डिफरेंसेस खुद अंदाजा लगा सकते हैं उनका और देख सकते हैं. So actually in the third period, taxonomists began giving great importance to the environment in process of speciation. They realized that environmental factors such as climate, habitat, and geography play a key role in shaping variation within population. So different environments create different selection pressure, leading organisms to adopt in unique ways. Like आप देख सकते हैं कि यहाँ पर अगर बहुत कोल्ड एनवायरनमेंट है, तो ये सिलेक्शन प्रेशर प्रोड्यूस करेगा उनके ऊपर, उन एनिमल्स के ऊपर, कि वो उस कोल्ड एनवायरनमेंट के साथ कैसे गुजारा करेंगे और वहां पर वो कैसे रहेंगे. सो दे विल अडॉप्ट. सो ओवर टाइम these organisms will adopt in unique ways. And over time, these adaptation can cause population to become increasingly different from each other. And this process eventually lead to the formation of new species known as speciation. So by focusing on the environment, taxonomists gained a deeper understanding of how species evolve in response to their surrounding. So now the environment act as a powerful force driving evolution and speciation. The introduction of the population concept by taxonomists into genetics gave birth to a new biological discipline called population genetics. Scientists like Goldsmith, Summer, and Dobzhansky made a major contribution to biology. They introduced the population genetics into genetics, shifting the focus from individuals to entire populations. You can see here the populations, different population of butterflies. Instead of studying single organism, scientists begin analyzing how genes are distributed and change within population over time. This integration of taxonomy and genetics led to the birth of a new field called population genetics. It helped explain how evolutionary forces like mutation, gene flow, and natural selection shape species. This development connected taxonomy with evolution and provided a deeper understanding of how species change and adapt over generations. These scientists introduced mathematical interpretation to population genetics and claimed that small variations are actually small mutations. So scientists like Haldane, Fisher, and Wright introduced mathematical approaches to population genetics. They used statistical models to explain how genes change within population over time. This scientific approach challenged the old Lamarckian thinking that traits are acquired and passed on. So now instead they showed that evolution occurs through small genetic mutation combined with natural selection. What once appeared as minor variation were now understood as real genetic change at the molecular level. So this shifted taxonomy toward a more precise and scientific understanding of evolution. Mathematics helped reveal that small variations are actually small mutations which drive evolution. Thank you so much for watching and listening. If you have any question, please ask in comment section.